Good morning, student. Today we will discuss about the exercise number 1.2 of sets. पिछले क्लास में हम लोगों ने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए थे. आज और नेक्स्ट आगे रिमेनिंग क्वेश्चंस देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. Third question of exercise number 1.2. Question number 3 is state whether each of the following sets is finite or infinite. You will check that given sets are finite or infinite. फाइनाइट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट काउंटेबल होते हैं. इनफाइनाइट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट अनकाउंटेबल होते हैं. सो हम लोगों को ये चेक करना है कि एलिमेंट जिससे सेट जनरेट हो रहा है वो काउंटेबल है कि नहीं काउंटेबल है. अगर काउंटेबल है तो फाइनाइट, अनकाउंटेबल है तो इनफाइनाइट. सो द फर्स्ट पार्ट सेट्स ऑफ लाइन व्हिच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस. Sets of line parallel to x-axis. x-axis के पैरेलल लाइंस का सेट इनफाइनाइट. x-axis के पैरेलल बहुत सारी लाइंस, देयर आर सो मेनी लाइंस मे बी पॉसिबल टू पैरेलल x-axis. So this set is infinite because number of the lines parallel to x-axis are not countable. So it is infinite. Infinite. Second is the set of letter in English alphabet. Set of letter in इंग्लिश अल्फाबेट. इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं? डेफिनेटली यू कैन काउंट इट इजली. सो इट इज फाइनाइट सेट. नंबर इज काउंटेबल. इट इज फाइनाइट सेट. Finite. Third is the set of number which are multiple of 5. Set of number multiple of 5. Number that is multiple of 5 is infinite. That cannot be countable. Cannot be count. बहुत नंबर हो सकते हैं. Because the total number of whole number, total number of natural number be infinite, so the multiple of 5 is also infinite. So this set is infinite. Similarly, remaining two parts of this question can be checked by you. आप इसे स्वयं चेक करें. Now question number 4. Question 4 is, in the following state whether A equal to B or not. A equal to B or not. A equal to B कब? When if A equal to B, if and only if the element of A or element of B. जो एलिमेंट A के हैं सेम एलिमेंट अगर B के हैं then A equal to B. Now we will check it. A इक्वल टू एक सेट है A B C D and B is D C B A. Serial is no important in the set. A element of A is element of B. B is element of A, B is
of B, C is the element of A, C is the element of B, D is the element of A, D is the element of B. Therefore, A equal to B. A equal to B. Second part, you will see set A के एलिमेंट 4, 8, 12, 16 और B के 8, 4, 16, 18. So A is not equal to B because all the number of 4A, 4, 8, 8, 12. 12 is element of A, but 12 is not element of B. In the second part of this question, 12 is element of A. Second part of this question, 12 is element of A, but 12 is not element of B. Therefore, A is not equal to B. Third question, 2, 4, 6, 8, 10. Set A, set B. X is such that X is positive even integers and X is less or equal to 10. सेम अगर इवन की बात है तो इवन लेस आर इक्वल टू 10 में 2, 4, 6, 8, 10 होगा और 2, 4, 6, 8, 10 is also element of set A. So you can say that A equal to B. Similarly, you can check the remaining part of this question easily. आप इजीली चेक कर सकते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5. आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल? गिव रीजन. ए इक्वल टू 2, 3 and B equal to X is such that X is solution of X square plus 5X plus 6 equal to 0. Set A का एलिमेंट क्या है? 2, 3. But when we solve this equation, X square plus 5X plus 6 equal to 0, we will get X square plus 3X plus 2X 6 equal to 0. Now taking common X plus 3 and plus 2X plus 3. Final factor is X plus 3 and X plus 2. When you will try to find the value of X, then X equal to minus 3 and X equal to minus 2. Minus 3 and minus 2 are element of set B and 2 and 3 are element of set A. So A is not equal to B. They are not equal set. A and B are not equal set in the first part of question number 3. क्यों? क्या रीजन क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है सेट A का एलिमेंट एंड नेगेटिव इंटीजर है सेट B का एलिमेंट. 2 is not equal to minus 2, 3 is not equal to minus 3, therefore A is not equal to B, so it is not equal set. And similarly, second part में X is a letter in the word follow. 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 Where we generated set one letter is one time. FOLW. ये set generate हुआ. And Y is such that Y is a letter of OLF. ये A. B. OLF. WOLF is also equal to WOLF. You can easily see that all element of set A is equal to all element of set B. So A equal to B in the second part of question number 3. तो ये question number 3 था. Now the question number 6, last question of this exercise.
form the sets given below, select equal sets. A 2 4 8 12, B 1 2 3 4, C 4 8 12 14, D 3 1 4 2, E minus 1 1, F 0 8, capital D 1 minus 1, and H 0. We have to select equal set in this system. To 2 8 4 8 12, 2 8 4 8 12, 2 8 4 8 12. 1 minute. 8 2 8 4 8 12. और किसी भी सेट में 2 8 4 8 12 नहीं है. B 1 2 3 4. तो यहाँ पे D is also 1 2 3 4. So B equal to D. B equal to D. E equal to minus 1 and 1. G equal to minus 1 and 1. Therefore E equal to G. And 0 1. 0 1 तो और है 0 A. Only B equal to B and E equal to G. Only 2 4 sets are equal, remaining are not equal. तो इस तरह इस एक्सरसाइज में आपने देखा इक्वल सेट को कैसे हम क्लासिफाई करेंगे, फाइनाइट सेट को कैसे क्लासिफाई करेंगे, इनफाइनाइट को कैसे क्लासिफाई करेंगे. नाउ आफ्टर दिस वी विल स्टडी अबाउट द equivalent set, power set, subset, the most important part of sets. And tomorrow, in the class of tomorrow, we will discuss it. Now that's all for today.